अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब्र नहीं है आप लोगों में, वो कहाँ से लेकर आए? इतने कोई मैसेज करता है क्या ग्रुप पे? ये एक ऐसी चीज है जो बाजार में नहीं मिलती है। उग जाओ भाई, थोड़ा मुझे तो रेडी होने दो। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। अभी यार तुम लोग है ना, चैट पे आके स्पैम ना करो तो तुम लोग की मेहरबानी होगी। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ऑल गुड। वालेकुम अस्सलाम जिगर के टुकड़ों। चले जी, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। आई एम गुड। मुझे देख कर सही हो गया। यस। यार एक गंदे गंदे नाम ना लो प्लीज चैट पे यार, ऐसा नहीं करो यार। डोंट आई लुक गुड ऑलवेज। अभी तो फिलहाल मेरी हालत टाइट है यार। बाल अजीब से हुए हैं, बियर्ड अजीब सी हुई हुई है, पूरा मिसमैनेज चल रहे हैं, अनऑर्गेनाइज चल रहे हैं। चले यार, शुरू करते हैं, टाइम इज शॉर्ट। मिल जाएंगे आपको। वी विल स्टार्ट विद सेक्शन टू, लाइक वी सेड। हमने करना तो सारे ही सवाल हैं, तो आ जाते हैं, शुरू कर लेते हैं अल्लाह का नाम लेके। सेक्शन टू इट इज, और सेक्शन टू के अंदर जो वेरी वेरी फर्स्ट टॉपिक इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल को हम एक कैजुअली रिवाइज कर लेते हैं, क्या ख्याल है? मजा आ जाएगा, जिंदगी दोबारा हो जाएगी अगर रिवाइज भी कर ले साथ साथ। तो जो हमारे पास नन्हे मुन्ने नए बच्चे जो हैं, उनको भी थोड़ा सा है ना आइडिया हो जाए कि उन्होंने क्या गलती करी, कहीं और जाके पढ़ गए, यहाँ क्यों नहीं है। तो लेट्स गो, चैट थोड़ी सी बंद करनी पड़ेगी मुझे, ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूँ। पार्टीशन ऑफ बंगाल का सवाल करें, 14 मार्क का सवाल करें, और जब भी 14 मार्क का सवाल पार्टीशन ऑफ बंगाल का आता है, यू हैव टू राइट द इंटायर टॉपिक लिखना होगा, पार्टीशन लिखना होगा, रिएक्शन लिखना होगा, रिवर्सल लिखना होगा, सब चीजें लिखनी होंगी। तो बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस, और ये कितना बड़ा प्रोविंस है, इसकी जो स्क्वायर माइल्स की अगर हम देखें तो ये 189,000 स्क्वायर माइल्स लार्ज था। और इसकी टोटल पॉपुलेशन जो थी वो 85 मिलियन थी, और इसको डिवाइड किया था लॉर्ड कर्जन ने दो हिस्सों में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। और लॉर्ड कर्जन जो था वो कौन था? वो वाइसरॉय था। तो बंगाल दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 31 मिलियन थी। इसके अंदर मुस्लिम्स 18 मिलियन थे, और हिंदूज जो थे ना वो 12 मिलियन थे। 1 मिलियन जो लोग थे, 1 मिलियन लोग बेसिकली माइनॉरिटीज से। और 1 मिलियन लोग के बाद जो है ना, ये एक एग्रीकल्चर एरिया था, तो यहाँ पे लोगों की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। सही है, आगे चलते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल एक हिंदू मेजोरिटी एरिया था, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 34 मिलियन थी, और हिंदू जो थे वो 42 मिलियन थे, और जो मुस्लिम से 12 मिलियन थी। और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था, यहाँ पे लोग फाइनेंशियली जो थे वेल ऑफ थे। सवाल आता है एग्जाम में, वाई बंगाल क्यों डिवाइड हुआ? तो बंगाल इसलिए डिवाइड हुआ था क्योंकि एक बहुत ही लार्ज एरिया था, और ये कितना लार्ज एरिया था? 189,000 स्क्वायर माइल्स लार्ज एरिया था, और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, फेमाइन, फूड शॉर्टेज, ये सब हो रहा था। तो एक गवर्नर से कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि एक गवर्नर से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो इसीलिए इन्होंने बंगाल को क्या कर दिया था? इसीलिए इन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया था। फिर बंगाल के अंदर दोनों हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते थे, उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज, उनका रिलीजन आपस में क्या था? अलग था। और बंगाल में क्या होती रहती थी? बंगाल में होती रहती थी वायलेंस। तो वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बंगाल को क्या कर दिया? वायलेंस में कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, थर्डली ब्रिटिश अपना रिलेशन जो है वो इम्प्रूव करना चाहते थे। किसके साथ इम्प्रूव करना चाहते थे? वो मुस्लिम के साथ इम्प्रूव करना चाह रहे थे। तो इन ऑर्डर टू डू सो इन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में क्या कर दिया? इन ऑर्डर टू डू सो इन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ताकि मुस्लिम जो है ना वो अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को क्या कर सके? फॉलो कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, अल्लाह बरा करे, नंबर 4 पे आ जाते हैं। कांग्रेस जो है ना वो ग्रो हो रहा था बंगाल के अंदर। कांग्रेस जो था वो बंगाल के अंदर क्या हो रहा था? वो बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा था, और वो ब्रिटिश को भी डोमिनेट कर रहे थे यार, ब्रिटिश को भी टफ टाइम दे रहे थे। तो ब्रिटिश उनकी पावर को तोड़ना चाह रहे थे, और इन ऑर्डर टू डू सो इन्होंने अपनी पॉलिसी फॉलो करी थी। इस पॉलिसी का नाम था डिवाइड एंड रूल। नंबर 5, ईस्ट बंगाल एक अनडेवलप एरिया था, यहाँ पे लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन जो थी ना वो बहुत ज्यादा वीक थी। तो ईस्ट बंगाल को डेवलप करने के लिए इन्होंने बंगाल को क्या कर दिया? इन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया।
रिएक्शंस पे आ जाते हैं, मुस्लिम्स का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। उनको एक इलाका मिल गया था जिसपे वो मेजॉरिटी में थे, और उन्होंने शुक्राने के नफ़िल पढ़े थे ढाका में। हिंदूज़ का रिएक्शन बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, उस मूवमेंट का नाम था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने ब्रिटिश की गुड सर्विस, स्कूल, कॉलेज सबको क्या करा था, बायकॉट किया था, एंड दे आल्सो ट्राई टू किल द फ्यूचर वाइफ लॉर्ड मिंटो। रटवा चुका हूँ मैं आपको ये सब। 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिवर्सल हुआ था, किंग जॉर्ज 5 ने किया था, दिल्ली में किया था, दरबार में किया था, प्रोटेस्ट थी, रैलीज निकली थी, टेररिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, कलकत्ता को बंद कर दिया गया था फ्यू डेज के लिए, और ब्रिटिश क्लोथ्स को जो है ना वो आग लगा दी गई थी। लोकल क्लोथ्स पहने जा रहे थे। पर्पस क्या था ये सब करने का? पर्पस ये था कि किसी तरीके से पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या कर दिया जाए, रिवर्सल कर दिया जाए। कमिंग टू पासिबस, हाउ सक्सेसफुल वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल? एक्सप्लेन योर आंसर। भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल सक्सेसफुल था कि नहीं था? तो अगर कंक्लूजन की बात करूं तो पार्टीशन ऑफ बंगाल सक्सेसफुल नहीं था। क्यों पार्टीशन ऑफ बंगाल सक्सेसफुल नहीं था? क्योंकि इन दी एंड क्या हो चुका था, इन दी एंड वो रिवर्स हो चुका था, इसीलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो सक्सेसफुल नहीं था। अब यहाँ पे आपने पूरा बताना है और आपने सक्सेस और फेलियर्स को डिस्कस करना है, क्या सक्सेस था और क्या फेलियर थी। आई एम गोइंग टू ड्राफ्ट एन आंसर। अगर आप लोग लिख चुके तो रफ कॉपी में लिखें। रिलेटिवली इंपॉर्टेंट टॉपिक इतना नहीं है, लेकिन 30-40% चांसेस है कि आपके पेपर में आ जाएगा। शुरू हो जाते हैं। बंगाल वॉज अ वेरी लार्ज प्रोविंस। बंगाल वॉज अ वेरी लार्ज एंड रिच प्रोविंस। Bengal was a very large and rich province, up to 189,000 square miles. Full stop. The total population was 85 million. The total population was 85 million. In 1905, Lord Curzon divided Bengal into two parts: East Bengal and West Bengal. East Bengal and West Bengal. Full stop. East Bengal had a population of 31 million. It was a Muslim majority area. It was a Muslim majority area. Full stop. West Bengal. EB for East Bengal, WB for West Bengal. West Bengal was a Hindu majority area. Was a Hindu majority area. Population of 54 million. Population of 54 million. Full stop. Like Bengal was divided. Bengal was divided due to many reasons. First of all, it was getting difficult for one governor to control Bengal. Administration issues हो रहे थे, famine हो रहा था, ये हमने पढ़ा था. There were administration issues. There were administration issues such as famine. So it was difficult. So it was difficult for one governor to control it. So it was difficult for one governor to control it. Full stop. Secondly, Congress was dominating in Bengal. Secondly, Congress was dominating in Bengal. Full stop. They were giving tough time to the British.
They were giving tough time to the British. So British wanted to break the power of the Congress. So British wanted to break the power of the Congress. इन्होंने अपनी policy follow किया तो उस policy का नाम था divide and rule. In order to do so, they use their policy of divide and rule. Full stop. Thirdly, British wanted to improve their relation with the Muslims. So they gave East Bengal to Muslims so they gave East Bengal to Muslims so that they can follow their culture, language and religion. So that they can follow their culture, language and religion. तो मैंने पार्टीशन के 3 रीजन लिख दिए हैं. अब मैं रिएक्शन पे जंप मार रहा हूं. मुस्लिम का रिएक्शन पॉजिटिव था, हिंदूज का रिएक्शन नेगेटिव था. Muslims had a very positive reaction. Full stop. They got an area in which they were in majority. Full stop. Now they can follow their culture, language and religion. Now they can follow their culture, language and religion. लेकिन हिंदूज का रिएक्शन कैसा था? हिंदूज का रिएक्शन नेगेटिव था. कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी? स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट का पर्पस था ब्रिटिश गुड सर्विस, स्कूल, कॉलेज सबको क्या करना? बाइकआउट करना. Hindus had a negative reaction. Full stop. They started Swadeshi movement. Full stop. In this movement, they boycotted British goods, services, school and languages. British goods, services, schools and languages. तो इन्होंने इस मूवमेंट में बाइकआउट किया था ब्रिटिश गुड्स को, सर्विस को, स्कूल को, लैंग्वेज को. They also tried to kill future Viceroy Lord Minto. They also tried to kill the future Viceroy Lord Minto. Full stop. They also tried to kill the future Viceroy Lord Minto. Full stop. Copy करें so that I can move forward. They also tried to kill the future Viceroy Lord Minto. Full stop. Protests and rallies were started. Protests and rallies were started. Calcutta was closed for few days. The protest was so strong. That British had to reconsider
the partition. The protest was so strong that British had to reconsider the partition, full stop. Finally, in 1911, King George V came to Delhi, and at Darbar, he announced the reversal of the partition. According to the above answer, it can be said that partition of Bengal, was not successful, as in the end, it got reversed. Full stop. Copy shopping, please. Corner here, please. हम नेक्स्ट सवाल करेंगे इंशाल्लाह ताला, ये भी एक ट्रबल मेकर सवाल है. Explain how the British reacted to Hindu-led protests against the partition of Bengal between 1906 and 1908. तो ब्रिटिश का रिएक्शन कैसा था? ब्रिटिश के बहुत सारे रिएक्शन थे. बुक के अंदर की नॉलेज बहुत ही लिमिटेड है. नाइजल स्मिथ हैड अ वेरी गुड लेक्चर ऑन दिस, तो हम नाइजल स्मिथ के लेक्चर को निकालते हैं. अनफॉर्चुनेटली इस पे कोई शक नहीं है कि मेरी एक कोताही हुई है कि मैं ये क्लास के अंदर इसको लेक्चर का पार्ट नहीं बना पाया. मेरे दिमाग से निकल गया, मेरे पैटर्न से निकल गया था. तो मैं उस खुदाई को ओवरकम करने के लिए मैं यहाँ पे ये सवाल करवा के अपनी उस मिस्टेक को ओवरकम कर रहा हूँ. ठीक है, तो तहे दिल से आई अपोलोजाइज कि मैं ये टॉपिक स्किप कर गया था और ये टॉपिक ने ट्रबल किया था बहुत सारे बच्चों को, तो कॉम्पनसेट मैं भी कर रहा हूँ. एक्सप्लेन हाउ ब्रिटिश रिएक्टेड टू हिंदू लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल बिटवीन 1906 एंड 1908. क्योंकि आपके पास लेक्चर नहीं है तो आपको ये आंसर लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो इसका आंसर ही लेक्चर है. लेक्चर में ही इसका आंसर है, तो आंसर लिखिए, लेक्चर लिखिए, बातें की है. इसको पढ़ के जरूर चाहिएगा प्लीज. इसको स्टार बना दो, फोल्ड कर दो, जो भी अच्छा लगे. आज लिखिए अपने पास, शुरू हो जाते हैं. ब्रिटिश डिवाइडेड बंगाल. British divided Bengal to bring administrative efficiencies. Full stop. As it was getting difficult to rule, but after partition of Bengal, the reaction was not good. In order to control the protest,
and Swadeshi movement in order to control the protests and the Swadeshi movement, the British took some actions. Full stop. First of all, there were restrictions on the newspapers and public meetings. Political parties were not allowed to meet, full stop. Many editors were put behind bars and some were prosecuted. मुझे लिटरली अब रियलाइज हो रहा है मैं क्लास में तुम लोगों को कितना लिख पाता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में भी दर्द होना शुरू हो गया. एक तो आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ राइटिंग एज वेल. आई लेफ्ट राइटिंग लॉन्ग वे बैक. तो मुझे बहुत भारी पड़ता है व्हेन आई राइट ऑन द iPad. So first of all, there were restrictions on the newspapers and public meetings. Political parties were not allowed to meet. Many editors were put behind bars and some were prosecuted. Full stop. In 1908, give me a moment please. यार बॉयज बच्चा पार्टी अगर आप लोग मुझे ना चैट पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करोगे तो एक मासूम सा सवाल है मैं यहाँ पे फोकस कैसे करूं. सर पेज नंबर 1 दिखाते हैं. मेरा बच्चा साथ साथ चलो ना प्लीज. मैं अगर पेज नंबर 1 आपको दिखाऊंगा तो फिर तो बाकी बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम हो सकती है ना यार. टाइम इज वैल्यूएबल. यू हैव टू बी विद अस. ठीक है तो थोड़ा सा कोशिश करें हमारे साथ रहें. मैं क्लास के बाद मैं आपको दिखा दूंगा. ठीक है. और सर इसके अंदर ये आएगा बेटा. आने को तो बहुत कुछ आ सकता है. अगर आपको पॉइंट आपको लगता है आपका वैलिड है तो आप लिख लें. मैं अपने वैलिड पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ. ठीक है. इस वजह से मैं व्हाट्सएप नहीं जवाब दूंगा. आ जाए. In 1908, a press act was passed in which the government got control of newspapers. Full stop. लेके अपने पास many leaders were arrested such as Tilak of Pune. Local prisons were filled with those people who were calling themselves as revolutionaries. आजादी के जो सपने देख रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था. जो अपने आप को रेवोल्यूशनरी कह रहे थे आगे अपने पास. लेकिन many people were deported without being charged on trial. Full stop. Tough measures were taken. But they were getting failed. Tough measures were taken, but they were getting failed. A better approach
was taken to win support, which is why Morley Minto reforms were introduced. Which is why Morley Minto reforms were introduced. तो Morley Minto reforms इसलिए भी लेकर आए थे ताकि इंडियंस का ना सपोर्ट विन कर सके, इंडियंस का दिल जीत सके, इस वजह से. Danshan, giving you guys time. चलो जी आगे चलते हैं. ये बेसिक सवाल है, स्वदेशी मूवमेंट क्या था और पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों आता. तो अगर कोई आउटसाइडर बच्चा है यूट्यूब पे भी, क्योंकि हम चल रहे हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं, तो इफ यू वांट टू टेक अ पिक्चर तो आप पिक्चर ले सकते हैं, प्लीज डू दैट. देखिए अब आप लोग क्या एक्सक्यूज नहीं है कि सर आपने हमें ना एंड टाइम पे ना टाइम नहीं दिया. ये एक्सक्यूज आपके पास खत्म हो गया, आपको एंड टाइम तक खड़ा हुआ, कोई हो या ना हो, आई एम देयर विथ यू गाइस टिल द एंड. हर रोज रातों को जहाँ पे ना आई कुड हैव रेस्टेड, मैं रेस्ट को छोड़कर मैं आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ फॉर ओनली टू रीजंस. नंबर वन, बिकॉज आई लव यू ऑल, एंड नंबर टू, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर रिजल्ट्स. डोंट disappoint me at all, guys. If you want any other services, name it, I am there. जो चाहिए मांग लो, मुझे कोई एतराज नहीं है, बट मेक श्योर आप लोग के एंड से जो है ना किसी किस्म की ना लापरवाही ना हो, किसी किस्म की आपके एंड पे जो है ना वो ना हो, क्या कहते हैं, खुताई ना हो. ठीक है, मेक मी प्राउड. चलो आगे चलते हैं. इजी सवाल है, छोड़ दें, इजी सवाल है, आगे चलते हैं. पेज नंबर 6 पे आ जाते हैं. व्हाई वाज मुस्लिम लीग फॉर्म इन 1906. आई नो इट्स अ इजी क्वेश्चन, लेकिन कुछ जगहों पे शायद किया होगा, कुछ जगहों पे नहीं किया होगा, क्योंकि डिफरेंस जो होती है ना वो होती है, कभी क्लास पे करवाया, कभी क्लास पे नहीं करवाया. अगर आप लोगों ने कर लिया फेयर इनफ, कोई मसला नहीं, 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर लेते हैं, और रिकॉर्ड भी हो रहा है तो मेरा भी फायदा हो जाएगा. एक्सप्लेन व्हाई द मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906. अच्छा, हम मुस्लिम लीग का लेक्चर भी खोल लेते हैं. ये रहा मुस्लिम लीग का लेक्चर आ गया. इट वाज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द मुस्लिम्स, और ये बनाई गई थी 1906 में, और इसको बनाया गया था विगारुल मुल्क. मुस्लिम लीग बनी थी ताकि मुस्लिम के राइट्स को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके. सबसे पहला रीजन क्या था, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी. कुछ हिंदू से बनारस के वो कह रहे थे हिंदी को क्या बना दो ऑफिशियल लैंग्वेज, किसको रिप्लेस करके, उर्दू को. तो उर्दू को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या बनाई, मुस्लिम लीग. नंबर 2 आते हैं हिंदू मुस्लिम राइट्स. तो हिंदूज और मुस्लिम्स का कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन क्या था, अलग था. और हिंदूज जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे, किसको डोमिनेट कर रहे थे, मुस्लिम्स को डोमिनेट कर रहे थे. तो मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने एक लीग बनाई, और उस लीग का नाम क्या था, मुस्लिम लीग था. नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 3, नेगेटिव रिएक्शन ऑन द पार्टीशन. हिंदूज का रिएक्शन पार्टीशन ऑफ बंगाल पे बहुत ज्यादा क्या था, नेगेटिव था. उन्होंने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी, स्वदेशी मूवमेंट. वी जस्ट रेड इट. स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने ब्रिटिश के गुड्स को, सर्विस को, स्कूल को, कॉलेज को, सबको क्या कहा था, बाइकआउट किया था. नंबर 4 पे आ जाते हैं हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप. तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का नाम क्या था, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का नाम था आर्य समाज. आर्य समाज क्या था, मुस्लिम को फोर्सिबली कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो, हिंदुइज्म में. तो मुस्लिम के रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बनाई मुस्लिम लीग. नंबर 5 पे आ जाते हैं शिमला डेपुटेशन. लॉर्ड मिंटो छुट्टियों पे गया था शिमला में, उनसे मिलने के लिए गए थे, डेलीगेशन मिलने के लिए गई थी, जिसका लीडर कौन था, सर आगा खान. आगा खान ने पुट फॉरवर्ड कर दी थी डिमांड्स को. मुस्लिम जो थे वो इतने खुश थे कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था वो अपनी खुद की बनाएंगे पॉलिटिकल पार्टी. और डिमांड्स क्या थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स और सीट्स इन द काउंसिल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिंदूज हैड देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी. हिंदूज की अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी का नाम था कांग्रेस. हमने 1 या 2 क्लास पहले सर सईद अहमद खान पढ़ा था, उसमें लिखा था. इस पार्टी को बनाया था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, और एक और बंदा था, उस बंदे का नाम था हेनरी कॉटन. ये पार्टी जो थी ना, ये पार्टी काम कर रही थी हिंदूज के लिए. तो मुस्लिम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या बनाई, मुस्लिम लीग बनाई.
तो आए जरा बेसिक 7 मार्क का सवाल है, 14 मार्क का सवाल आएगा तो आप ज्यादा रीजन लिखेंगे, 7 मार्क का सवाल आएगा तो आप कम रीजन लिखेंगे। ऑल टुगेदर वी हैव 6 रीजन, उससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप ज्यादा लिखना चाहे आप ज्यादा लिख लें। मेरे पास 6 रीजन है जो कि बेहतरीन 6 रीजन है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आ जाए प्लीज। एक्सप्लेन व्हाई मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906। फाइनली मेरे हाथ को रिलैक्सेशन मिलेगी, आपके हाथों को नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906। Muslim League was formed in 1906. Muslim League was formed in 1906. Muslim League was formed in 1906 by Vikarul Mulk. Muslim League was formed in 1906 by Vikarul Mulk. Full stop. By Vikarul Mulk. Full stop. Like the purpose was to protect the political parties of the Muslims. The purpose was to protect the rights of the Muslims. Sorry, गलती से बोले था. The purpose was to protect the rights of the Muslims. The purpose was to protect the rights of the Muslims. Full stop. There were many reasons for the formation of the Muslim League. There were many reasons for the formation of the Muslim League. There were many reasons for the formation of the Muslim League. There were many reasons for the formation of the Muslim League. Full stop. Like first of all, Lord Minto was on vacation to Simla. First of all, Lord Minto was on vacation to Simla. A delegation led by Sir Aga Khan went to meet him. A delegation led by Sir Aga Khan went to meet him. A delegation led by Sir Aga Khan went to meet him. A delegation led by Sir Aga Khan went to meet him. Full stop. Muslims ने अपनी डिमांड्स को put forward कर दिया था, लेकिन Muslims put forward the demands. Muslims put forward the demands of separate electorates and seats in the council. Muslim put forward the demands of separate electorates and seats in the council. And seats in the council. Full stop. लॉर्ड मिंटो ने ये दोनों डिमांड्स को कर लिया था एक्सेप्ट, लेकिन लॉर्ड मिंटो accepted these demands. Lord Minto accepted these demands. Lord Minto accepted these demands. Full stop. Muslims were so happy that they decided to go for the separate political party. Muslims were so happy. Muslims were so happy that they decided to go for the separate political party, which was known as Muslim League. Which was known as Muslim League. Which was known as Muslim League. Full stop. लेकिन secondly, Hindu extremist group. Secondly, Hindu extremist group. Secondly, Hindu extremist group. Arya Samaj said. Secondly, Hindu extremist group Arya Samaj said that Muslims should be forcibly converted into Hinduism. That Muslims should be forcibly converted into Hinduism.
that Muslims should be forcibly converted into Hinduism. So to protect Muslims' religion, Muslim League was formed. So to protect Muslims' religion, Muslim League was formed. So to protect Muslims' religion, Muslim League was formed. Full stop. Thirdly, some Hindus of Banaras said, that Hindi should be the official language of India. That Hindi should be the official language of India, replacing Urdu. That Hindi should be the official language of India, replacing Urdu. Full stop. So to protect Urdu, Muslim League was formed. 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 Full stop. So to protect Urdu, Muslim League was formed. Full stop. आगे चले चलते हैं। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का, was similar deputation the most important reason for the formation of Muslim League later that same year? Explain your answer. पूरा सवाल आएगा मुस्लिम लीग का, सारे रीजंस आएंगे, लेकिन आंसर आप स्टार्ट करोगे कैसे? आंसर स्टार्ट करोगे शिमला डेपुटेशन से। तो आपका पहला पैराग्राफ जो है ना इंट्रोडक्शन का हो गया भाई। मुस्लिम की पॉलिटिकल पार्टी थी, 1906 में बनी, विकारुल मुल्क ने बनाई। फिर आप दूसरे पैराग्राफ में शिमला डेपुटेशन डाल दोगे पूरा। शिमला डेपुटेशन के बाद फिर आपकी मर्जी है, यहाँ पे सेकंड रीजन आ गया, सेकंड रीजन जो भी आपको अच्छा लगे, थर्ड रीजन आ गया, कोई सीक्वेंस नहीं होगी, फिर फोर्थ आ गया, फिर फिफ्थ आ गया रीजन, फिर सिक्स्थ आ गया रीजन आपका। कंक्लूजन में आप सपोर्ट करोगे शिमला डेपुटेशन को, कंक्लूजन में आप सपोर्ट करोगे किसको? सपोर्ट करोगे शिमला डेपुटेशन को आप सपोर्ट करोगे। तो कंक्लूजन में यू आर गोइंग टू सपोर्ट शिमला डेपुटेशन। आई वुड लाइक कि अगर आप घर पे ये सवाल कर लें तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आई टोल्ड यू द फॉर्मेट, करना तो पड़ेगा आपके अब्बा जान को भी, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट है भाई, पेपर है, और तुम लोगों ने मुझे अगर डिसअपॉइंट किया तो आई स्वेयर टू गॉड मैंने पंखे पे उल्टा लटका देना है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। कीप दैट इन माइंड। मेरी एफर्ट्स आया करी ना बेटा, ये रिलैक्सेशन का टाइम तुम लोग से स्पेंड कर रहा हूँ, नॉट डूइंग अ फेवर, नॉट डूइंग एन एहसान, बट मेरी एफर्ट्स को जाया नहीं करना गलती से, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा यार अपना। चलो कॉपी कर लेगा किसी को, ये कॉपी करना है तो फॉर्मेट रीजंस और रीजंस कॉपी में और लेक्चर में लिखा आती है। चले जी आगे चलते हैं। ये बाकी सवाल रिपीटेड ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्सप्लेन व्हाई द कांग्रेस पार्टी अपोज मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। क्यों कांग्रेस पार्टी ने अपोज किया था मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स को? क्यों कांग्रेस पार्टी ने अपोज किया था मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स को? मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स भी निपटा देते हैं। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद है गेस्ट पेपर बना रहे थे क्लास के अंदर, तो वहां पे मैंने बताया था मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स इंडिविजुअल नहीं आया। इंडिविजुअल ना आने का मतलब है कि भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल मतलब क्या कि आपके लिए क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आए जरा शुरू हो जाते हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म से। तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स जो है ना, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है आपका पहला
कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स की। अगर हम बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड मिंटो ने और जॉन मॉडले ने किया था। और इसका अगर हम एक और बात करें, इसको एक और नाम दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 फुल स्टॉप। पर्पस क्या था? पर्पस था फुलफिल करना डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम्स। पर्पस क्या था? फुलफिल करना किसकी डिमांड्स को? फुलफिल करना मुस्लिम की डिमांड्स को फुलफिल करना। तो हमने कुछ फीचर्स लिखे थे। फीचर नंबर 1, मुस्लिम्स को क्या मिल गए थे? सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मुस्लिम्स को क्या मिल गए थे? मुस्लिम्स को मिल गए थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स। नंबर 2 आ जाते हैं प्रोविंशियल काउंसिल बना था। प्रोविंशियल काउंसिल का काम होता है प्रोविंसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रोविंशियल काउंसिल का काम क्या होता है? प्रोविंसेस की प्रॉब्लम को क्या करना? सॉल्व करना। लार्जर प्रोविंस में 50 मेंबर्स होंगे, स्मॉलर प्रोविंस में 30 मेंबर्स होंगे। लार्जर प्रोविंस में 50 मेंबर्स होंगे, स्मॉलर प्रोविंस में 30 मेंबर्स होंगे। और इंपीरियल काउंसिल बना था जिसमें इंडियन का रोल क्या था? एडवाइजरी था। यानी वो सिर्फ बोल सकते हैं लेकिन उनकी सुनी जाएगी या नहीं जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और हर 10 साल के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। आफ्टर एवरी 10 years अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विल बी इंट्रोड्यूस। रिएक्शन पे आते हैं। मुस्लिम का रिएक्शन बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, उनकी डिमांड्स फुलफिल हो गई थी। हिंदूज का रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या था? हिंदूज का रिएक्शन बहुत ज्यादा नेगेटिव था। और हिंदूज का रिएक्शन क्यों नेगेटिव था? क्योंकि मुस्लिम्स को क्या मिल गए थे? सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए थे। और इंडियंस का रोल जो था काउंसिल पे वो क्या था? एडवाइजरी था। तो कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रहा था पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्या होगा? रिवर्सल होगा, जो कि हुआ नहीं था। इन सब रीजंस के मद्देनजर में रखते हुए कांग्रेस ने कहा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का हम क्या कर देंगे? हम रिवर्स कर देंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल का हम क्या करेंगे? पार्टीशन ऑफ बंगाल का हम रिवर्स कर देंगे। आगे चलते हैं, सवाल पे आते हैं। Why did Congress oppose the Morley Minto reforms of 1909? तो कांग्रेस ने क्यों अपोज किया था मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स को 1909 के? तो आए जरा शुरू करते हैं। लेकिन कांग्रेस अपोज मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। कांग्रेस अपोज मॉडले मिंटो reforms for many reasons. Congress opposed Morley Minto reforms for many reasons. Full stop. Paragraph change. लेकिन first of all, Congress started Swadeshi movement. First of all, Congress started Swadeshi movement. Full stop. First of all, Congress started Swadeshi movement. Full stop. In this movement, they boycotted British goods. In this movement, they boycotted British goods. Full stop. Again, the purpose was to pressurize the British for the reversal. The purpose was to pressurize the British for the reversal. Full stop. Again, in 1909, Congress was expecting. In 1909, Congress was expecting. In 1909, Congress was expecting the reversal of the partition. Congress was expecting the reversal of the partition. Congress was expecting the reversal of the partition, which was not done. Which was not done. Which was not done. Which was not done. That is why Congress opposed. That is why Congress opposed Morley Minto reforms. That is why Congress opposed Morley Minto reforms. That is why Congress opposed Morley Minto
reforms. First job. लेकिन secondly Muslims were given separate electorates. Secondly, Muslims were given separate electorates. Secondly, Muslims were given separate electorates. Secondly, Muslims were given separate electorates. Full stop. It was an important demand. It was an important demand. It was an important demand for the Muslims. Full stop. They were very happy. They were very happy. They were very happy. Full stop. On the other side, Congress was not happy. On the other side, Congress was not happy, which is why they opposed Morley-Minto reforms. Which is why they opposed Morley-Minto reforms. Which is why Congress opposed Morley-Minto reforms. Which is why Congress opposed Morley-Minto reforms. Which is why Congress opposed Morley-Minto reforms. आ जाते हैं लेकिन thirdly, Indians were given seats in the council. Thirdly, Indians were given seats. Thirdly, Indians were given seats in the council, but the role on the council was advisory. 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 Full stop. This offended Congress. This offended the Congress. And they decided to oppose Morley-Minto reforms. This offended the Congress. And they decided to oppose Morley-Minto reforms. And they decided to oppose Morley-Minto reforms. And they decided to oppose Morley-Minto reforms. Bacha party, I know majority of the bachas have done this question, but like I said, कि भाई कुछ बच्चों ने class skip करी होगी, कुछ बच्चे class में focus नहीं होंगे. We have new students, हमारे पास बहुत सारे teachers के बच्चे आए हुए हैं, तो हम सबको साथ लेके चल रहे हैं. Who was general diet? 4 mark का handout दे चुका हूँ, 4 mark के handout से देख लीजिएगा. इस ये करा के टाइम नहीं करना चाह रहा मैं. आ जाते हैं. What was सत्याग्रह? सत्याग्रह भी एक non cooperation movement थी मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरी बहनों. ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं. ये मुश्किल है, तो ये करवाने का बोले तो समझ में आता है. Was the introduction of the Rowlatt Act in 1919 the sole cause of the violence in India during the 1919 and 1920? Explain your answer. तो इसके अंदर जो है ना हम सारी बातें लिखेंगे. हम इसके अंदर अमृतसर मैसेकर भी लिखेंगे, जालियांवाला बाग भी लिखेंगे, मॉन्टेक चैम्सफोर्ड भी लिखेंगे, कुछ हद तक खिलाफत मूवमेंट का टच भी डाल देंगे. इसको लिखते हैं ना, ये ना दबंग सवाल, तो इसको जरा देखते हैं. शुरू हो जाते हैं. लिखिए अपने पास. ड्यूरिंग 19th and 20th century there were many events which became a reason
for the violence, which became a reason for the violence. Full stop. First of all, in 1919, Rowlatt Act was passed. Rowlatt Act was passed. Full stop. लिखिए अपने पास. It introduced a trial without a jury and detention without bail. Full stop. Jinnah declared this law as inhuman. Full stop. It caused uproar in India because it appeared to go against the central principles of British justice. Full stop. The governor will decide where to live. The purpose was to control the revolutionary activity. The purpose was to control the revolutionary activity. Full stop. Strikes and demonstrations took place. Full stop. And the British made the matter worse by introducing some laws such as banning anti-British publications, by banning anti-British publications. Full stop. लिखिए अपने पास. On April 10th, writing started in the city of Amritsar. Full stop. General Dyer, the British commander, General Dyer, the British commander, was responsible to restore law and order in the public places. In the public places. Full stop. In the public places. Full stop. आगे चलते हैं. General Dyer got angered. General Dyer got angered when he saw a crowd of 20,000 doing a peaceful protest at Jallianwala
Bagh, full stop. General Dyer started firing. General Dyer started firing. General Dyer started firing. 400 people were killed and 1,200 were injured. This created further violence in India. This created further violence in India. Full stop. Copy करें फिर मैं पेश कर रहा हूं. This created further violence in India. This created further violence in India. आगे चलते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं. 1990 में मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आ गए थे, लेकिन मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेक Chelmsford reforms were introduced. Full stop. लेके अपने पास in this reforms only 2% Indians can vote. Indians can vote, which further became a cause of violence, which further became a cause of violence. Full stop. Indians were expecting further rewards as they supported British in the World War, but they were not given. Mistrust was developed. Hindus were not given self-rule, so further violence increased. Full stop. As an evaluation, we can say that denial of basic rights in Rowlatt Act became the sole reason for violence in India. Full stop. That's the end of this answer. I think आज के लिए इतना ही काफी है. अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे. फी अमान अल्लाह. कॉपी कर लें जल्दी से. शाबाश. मुलाकात करते हैं in your normal classes.